मोस्टली आज प्रोजेक्ट आम कौन करवा ना आज क्लास रे हम गोटे छोट प्रोजेक्ट करवा जमती कि मु डिस्कशन आम लास्ट क्लास रे करथिले राइट। तो से प्रोजेक्ट रे हम कौन करवा कंप्लीटली गोटे पाइपलाइन स्क्रिप्ट लिखिबा। तो से पाइपलाइन स्क्रिप्ट रे तो हमें जेनकिंस जो यूज है बेसिकली कौन पाई सीआई एंड सीडी राइट, कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन एंड कंटीन्यूअस डिलीवरी। तो मोस्टली हमें कंटीन्यूअस इंटीग्रेशंस केमती देखिबा, continuous integrations and continuous delivery. Okay, so we'll see from the scratch how we can set off these continuous integrations. We'll write the pipeline script and the required setup we have to do. So before writing the pipeline script, right, before writing the pipeline script, let me explain you what we are going to achieve in this project. Okay, with a diagram I'll show you what we are going to. First, actually, whenever you're going to work, right, first thing is you need to understand the requirement fully. So now first I'll tell you the requirement. Okay, so ame already jani sariche like freestyle job kemti create kariba au pipeline project kemti create kariba, right? Freestyle project au pipeline project. तो काली रा क्लास रे हमें pipeline project creations मु देखैतली with GitHub kemti कनेक्ट करिए गिटहब रे जेनकिंस फाइल लिखिबा, लेखिकरी सेठू हमें केमती गिटहब को डायरेक्ट गिटहब रो प्रोजेक्ट आनकरी बिल्ड करिबा। तो सेटा हम बेसिकली गोटे सबस्क्रिप्ट बिल्ड करी मु देखैतली राइट। तो आजिरो प्रोजेक्ट रे हमें कोन करिया गोटे जावा एप्लीकेशन को बिल्ड करिबा राइट। तो केमती कोन हबो द रिक्वायरमेंट अछि फर्स्ट हमर गोटे जावा एप्लीकेशन। द रिक्वायरमेंट इज फर्स्ट डू ए build, okay, build and deliver, build and deliver a Java application, build and deliver a Java. So to build and deliver the Java applications, what we need the Java application, the URL, the project URL, right? Okay, and we need to know which versions of Java is required to be built there. Okay, and then what we need to deliver the places. So what we are going to do here? So the first thing is we are going to build the Java applications in our Jenkins server. So we are going to make the Jenkins server as our build server now. Okay, I'm not going to create a separate build server. So in our upcoming classes, when we cover the master and agent setup, that time I'll show you how we can build the applications in a different server. तो सेतबेले हमें देखिबा केमती डिफरेंट सर्वर रे बिल्ड करिबा। तो वर्तमान मु कोन करिबा ना ए जेनकिंस सर्वर रे राइट, जेनकिंस सर्वर रे वर्तमान मु कोन करिबा छी, कोन करिबा एथिरे मते दरकार जावा एप्लीकेशन बिल्ड करिया पई। तो एथिरे मते जावा इंस्टॉलेशंस थिबा दरकार। ऑलरेडी जेनकिंस सर्वर रे जावा इंस्टॉलेशंस अछि राइट। तो ताकू कोन कर पुनी जेनकिंस सर्वर हमु कोन दरकार मेवेन दरकार, जोटा कि हमें बिल्ड टूल हिसाब रे यूज करिबा मेवेन राइट। मेवेन फरे हमको दरकार कोन गिट टूल भी इंस्टॉल हेतिबा दरकार, गिट रे हमें कोड चेकआउट करिबा। तो ए तीनटा नेसेसरी टूल हमको दरकार जावा, मेवेन एंड गिट। तो ई पर्टिकुलर तीनटा टूल जेमती जेनकिंस सर्वर रे जोटा हमें बिल्ड सर्वर, ए जेनकिंस सर्वर टाको हमें बिल्ड सर्वर बनेइबाकू जाउचे, बिल्ड सर्वर। ओके, सो हमर एप्लीकेशन कोन होबो ना ए जेनकिंस सर्वर रे बिल्ड हो। तो जेनकिंस सर्वर बिल्ड सरिला परे कोन होबो ना एटा को कोन करछि से जो बिल्ड प्रोडक्टटा। तो जावा रो बिल्ड रिजल्ट कोन होबो, एटा जो हमें गोटे जावा करबा एटा गोटे वेब एप्लीकेशंस, ए जावा वेब एप्लीकेशंस। ओके, build and deliver a Java web applications. So what is the result, build result of a web application? It will be a war file, .war file. Okay, so Jenkins build sarijibo, after the build is done, right, build is done, what will happen? It will generate a war file. So say war file टाको हमें कौन करिबा .war file टाको binary file टाको deliver करिबा कोठी की our S3
बकेट को राइट S3 बकेट को आम डेलीवर कर तो S3 बकेट कोड रहा आमर AWS रे AWS S3 बकेट एटी को आम कौन करवा आमर एप्लिकेशन टा डेलीवर करवा राइट तो एप्लिकेशन वन से डेलीवर हो गला तो आउ गोटे कौन करिवे ना वर्तमान टाइम रे मु सेव एप्लिकेशन को आउ गोटे लोयर एनवायरनमेंट को सेंड करबी जोटा कि हमर कोन टॉमकैट सर्वर थिबा ओके सो टॉमकैट कोन टॉमकैट होची गोटे वेब एप्लिकेशन सर्वर वेब सर्वर जोटी कि आमे हमर एप्लिकेशन को होस्ट करिवा ए जो एप्लिकेशन दो वार फाइल आसिला से वार फाइल टा को आमे होस्ट करिया कोडी टॉमकैट तो टॉमकैट भी होची गोटे कोन वेब सर्वर गोटे एप्लिकेशन राइट वेब एप्लिकेशन सर्वर तो एप्लिकेशन सर्वर को टॉमकैट को तो हमें कोन टॉमकैट सर्वर इज एंटायरली आल्सो बिल्ट इन जावा तो ता पई कोन दरकार टॉमकैट सर्वर जोठी हमें इंस्टॉल करिवा जो सर्वर रे तो एठी हमें गोटे जेनकिंस गोटे सर्वर रे रखिबा तो टॉमकैट सर्वर हमर आउ गोटे सर्वर हमें क्रिएट करिबा जोटा कि हमें टॉमकैट सर्वर क्रिएट रखिबा राइट तो से टॉमकैट सर्वर ना हमें कोन दबा धर से टॉमकैट सर्वर हमें रखिचे अलग सर्वर तो टॉमकैट सर्वर को पई दरकार हम कोन एतरे भी इंस्टॉलेशन जावा इंस्टॉलेशंस दरकार वी हैव टू इंस्टॉल द जावा राइट तो जावा इंस्टॉलेशंस पर तापर हमें टॉमकैट इंस्टॉल करिवा कारण टॉमकैट जो जावा एप्लिकेशन ता पई जावा दरकार जावा हे गेला तो वर्तमान कोन होउछला एठी हमर कंटीन्यूअस बिल्ड विल हैपन वेयर और कंटीन्यूअस बिल्ड विल हैपन in the build server here we'll have the continuous build हबो कोडी जेनकिंस रे तो कंटीन्यूअस बिल्ड हे गला परे कोन हबना से जो फाइल को जो डिलीवर होची लोयर एनवायरनमेंट को राइट तो एई पर्टिकुलर पार्ट ता कोन हला हमर कंटीन्यूअस डिलीवरी कंटीन्यूअस डिलीवरी राइट कंटीन्यूअस डिलीवर तो एटा कंटीन्यूअस जो डिलीवर हम करछे कोडी करछे आइदर S3 हाउ टॉमकैट वेब एप्लिकेशन तो तमे एटी क्वेश्चंस पछार काई कि हमें दुई जगह को एट ए टाइम डिलीवर करछे ओके तो एठी मु केवल तुमको डिलीवर पार्ट देखौची तो गुटी तमे चाहिले केवल गुटी लोअर एनवायरनमेंट को बा स्टेजिंग एनवायरनमेंट को टेस्टिंग एनवायरनमेंट को डिलीवर करि पारे आ गोटे ला S3 बा गोटे रेपोजिटरी को गोटे बाइनरी रेपोजिटरी को स्टोर करि पारिबो मु एठी S3 यूज करछि S3 गोटे कोन ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज कोडी AWS रे जोडी कि हमें गोटे ऑब्जेक्ट स्टोर करबा तो एठी हमर ऑब्जेक्ट कोन होची गोटे वार फाइल से वार फाइल टा को हमें स्टोर करबा राइट तो सेटू कोन करबा हमें जदी डायरेक्टली जेनकिंस एठी डिलीवर न करे तो हमें अलगा टूल यूज करिकरी जेमति कि एंसिबल डॉकर यूज करिकरी डायरेक्टली हमें कोन करि परिबा एटा को डिप्लॉय करबा डिलीवर करबा कोडी की टॉमकैट सर्वर तो बेसिकली कंपनी मानकरे केमती काम हुए कंपनी मानकरे हमर डायरेक्टली वार फाइल जो जनरेट हुए से जे कोनसी गोटे आर्टिफैक्टरी रे स्टोर हबो एठी हमें S3 हमें यूज करछे कंपनी मानकरे से माने कोन यूज करबे नेक्सस यूज करथिबे राइट नेक्सस किंबा जेफ्रॉग राइट तो ये सब एप्लीकेशन से माने यूज करथिबे स्टोर कर ये सब कोन की एप्लीकेशन ता हैला सब आर्टिफैक्टरी आर्टी आर्टिफैक्टरी सो आर्टिफैक्टरी कोन जोटा कि स्टोर हबो हमर बाइनरी प्रोडक्ट बाइनरी फाइल्स सो बाइनरी फाइल्स कोन हबो ना स्टोर हबो कोड स्टोर हबो सब्जेक्ट नेक्सस पर जेफ तो नेक्सस आउ जेफ्रॉग इज नथिंग बट द बाइनरी files or these are the artifacts these are the artifacts and where the artifacts will stored that is called your artifactory so nexus and jfrog is the artifactory and this war file is nothing but is called artifact okay this artifact
will get stored into the artifactory. Where it will get stored, that's called artifactory. Okay, तो हमरो प्रोजेक्ट एते कॉम्प्लिकेटेड मु कहय जाउनी, तो हमें सिंपल वे रे जो प्रोजेक्ट हमर एठी बिल्ड होबाकू जाउची सेटा को हमें कोन करबा, डिलीवर करबा टॉमकाट सर्वर को। आ सेम टाइम तुमको बतै देबी सेटा केमती हमें डिलीवर करबा S3 प्रोजेक्ट को, सॉरी S3 ऑब्जेक्ट स्टोरेज को, राइट। S3 स्टोरेज रे बा S3 बकेट रे केमती स्टोर करबा। तो S3 बकेट रे स्टोर करला हमें वर्जनिंग कंट्रोल टा वर्जनिंग एनेबल करथियो, जोडे कि हमर ईच टाइम हमें ऑब्जेक्ट स्टोर करिया न्यू वर्जन रे स्टोर होदो। आ सेही पर्टिकुलर फाइल को हमें हमें जेतो एंसिबल पड़िबे से एंसिबल रे हमें केमती ताकू S3 बकेट रु आनिकरी डिप्लॉय करिबा। ऑलरेडी सतीश को गोटे सिमिलर काइंड ऑफ प्रोजेक्ट देइतल, सतीश ऑलरेडी से प्रोजेक्ट टा करि जंती, जेतो ऑलरेडी सतीश जेनकिंस क्लास प्रीवियस बैच जेनकिंस क्लास पढ़ी सारी चंदी, तो से माने से ऑलरेडी प्रोजेक्ट टा करि चंदी, राइट। तो वर्तमान हमें आज रो क्लास रे हम कंप्लीटली ए प्रोजेक्ट ऊपर फोकस करिबा, राइट। तुम बुझी गलो। तो फर्स्ट मते कोन करियर अछि, जेनकिंस को लॉगिन करी जेनकिंस ने फर्स्ट चेक करबी मोर जावा आउ मावेन गिट इंस्टॉल हेछि ना नाही, राइट। तो जदी हेइनी हमें इंस्टॉल करिया पड़े। तो जावा इंस्टॉलेशंस हमें वेरी वेल वी नो इट, गिट इंस्टॉलेशंस भी हमें बहुत भलो भाबे जानिछे। तो आज मु मावेन इंस्टॉलेशंस रो मावेन ता केमती इंस्टॉल करबा केमती यूज करबा ता विषय बते देबी, ठीक अछि। तो लेट्स गो अहेड टू आवर जेनकिंस सर्वर। ओके, तो मु जेनकिंस सर्वर को लॉगिन करिया जाउची। जेनकिंस डॉट ओके। तो फर्स्ट थिंग हैला हमें सेटअप करिबा कोन, फर्स्ट जावा ऑलरेडी इंस्टॉल हे जाइतिबो, कारण हमें जेनकिंस सर्वर रे यूज करछ ऑलरेडी। जेनकिंस सर्वर जावा इंस्टॉल हेछि, गिट भी हमें ऑलरेडी देखिचे केमती इंस्टॉलेशंस करबा। तो मु वेरीफाई कर दोछि बैकएंड रे लॉगिन करिकरी हमर जेनकिंस सर्वर, राइट। बैकएंड रे लॉगिन करी जेनकिंस सर्वर को चेक कर दोछि। तो कोन करिबा, ओके। तो एटा मोर जेनकिंस बैकएंड सर्वर, गिट वर्जन चेक करिबा, ओ वर्जन गिट इंस्टॉल हेछि कि नाही। यस, गिट 2.40.1 ऑलरेडी इंस्टॉल हे जाइछ। तो जावा भी जावा वर्जन चेक कर दो। यस, जावा 17.0 ऑलरेडी वर्जन also इंस्टॉल। तो maven command not found, that means maven is not installed, right। तो maven को हमें इंस्टॉल करिया वर्तमान। तो बेसिकली maven कोन हेतिबो ना, ओपीटी डायरेक्टरी हम रखिबा। तो मु देखि बतै दोछि तुमको maven केमति इंस्टॉल करिबा और से maven टा केमति सेटअप करिबा जेनकिंस रे, राइट। तो व्हाट इज maven? ओके, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन यू अबाउट maven। तो maven टा कोन, हमें काहे कि ताके यूज करिबा। तो हमें एक्चुअली हम रिक्वायरमेंट कोन, रिक्वायरमेंट है बिल्ड आउट डिलीवर जावा एप्लिकेशन। तो जावा एप्लिकेशंस पय हमको गोटे बिल्ड टूल दरकार, राइट। जावा एप्लिकेशन पय हमको गोटे बिल्ड टूल दरकार। तो से बिल्ड टूल टा कोन हमें maven यूज करबा को जाउची। तो maven रो किछ बिल्ड लाइफ साइकिल अछि, राइट। maven बिल्ड लाइफ साइकिल तको तुमको बिल्ड लाइफ साइकिल देखोची जे कोनसी प्रोजेक्ट रो बा जावा प्रोजेक्ट रो maven जो हमें यूज करूची जावा रिलेटेड प्रोजेक्ट हमें जावा भी यूज करूछ मो दे maven बिल्ड लाइफ साइकिल। ओके, पर्टिकुलरली maven एलाकार अपाची प्रोडक्ट, Tomcat भी Apache product, HTTPD भी also Apache product, Apache company, right? Apache Maven, Apache Tomcat, Apache HTTPD server, application server, right? So जो build life cycle अछि, तो application जो build होछि तार गोटे life cycle अछि। जेमति कि हमर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल रे डेवलपमेंट प्रोसेस टा केमति स्टार्ट होछि, केमति रिक्वायरमेंट एनालिसिस, गैदरिंग, सिस्टम डिजाइन, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, राइट। सो different stages roche, different phases roche life cycle, complete development life cycle। तो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भितर बिल्ड भी रोची, जोटा कि डेवलपमेंट करे हमें एप्लिकेशन को बिल्ड कर। तो बिल्ड रो पर्टिकुलर किसी लाइफ साइकिल जोटा रोची सेटा भितर हम डिस्कशन करिबा, जोटा कि maven बिल्ड लाइफ साइकिल विषय रे हम जो कोच maven। तो नॉर्मली कोन होची बिल्ड साइकिल किछि गोटे फेजेस से आसुची, जोटा कि ए डिफरेंट फेजेस एति कि जस्ट तार
जो अच्छी सातटा स्टेजेस अच्छी फेजेस अच्छी ये सतरा फेजेस खाली मन रखा पड़ो बेसिकली बहुत कम फेजेस आम यूज करवा ओके तो फर्स्ट थिंग है वैलिडेट व्हाट विल डू इट विल वैलिडेट द प्रोजेक्ट इज करेक्ट एंड ऑल नेसेसरी तो मेवेन जेतेबेले आम यूज करवा तार कमांड है एमवीएन इंस्टॉलेशंस पर आम एमवीएन यूज करवा तो कमांड कौन को यूज करवा एमवीएन एमवीएन यूज कले मेवेन कमांड यूज हम राइट तो एमवीएन वैलिडेट आम कौन करवा एमवीएन validate so mvn validate what it will do it will validate the project is correct and all necessary information is available so এটা validate करिवो project ठीक अछि ना नहीं next करिवो compile जेतु गोटे जावा कोन गोटे कंपाइलेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो हमें जावा रे जे कोन एप्लीकेशन बनैछे माने तो हमको कंपाइल करबा पड़िबो तो हमें फर्स्ट वी हैव टू यूज कंपाइल to compile the source code of the project right test the compiled source code package तो हमको completely पैकेज करिया पड़िबो तो जो बिल्ड जो हमें करूचे बिल्ड रे हमें वैलिडेट करिवा कंपाइल करिवा टेस्ट करिवा पैकेज करिवा राइट तो पैकेज कले तो এটা লাইফ সাইকেল ভিতরে আছে প্যাকেজিং টেক দ্য কম্পাইলড কোড এন্ড প্যাকেজ ইট ইন ইটস ডিস্ট্রিবিউটেবল ফরম্যাট such as jar var right war the distributable format जो distributable format कोन होची राइट तो आमे जतबे जावा कोड जने गोटे डेवलपर जावा कोड लिखुची राइट गोटे डेवलपर जावा कोड लिखुची तो जावा कोड लिखले कोन से तार सोर्स कोड लिखिबो राइट जावा सोर्स कोड लिखिबो जावा सोर्स कोड लिखिबो तो से सोर्स कोड को हमें कौन करिया सोर्स कोड ता जोटा कि इजीली हमें माने कोन विजिबल हमें जानि परिया कोड कोन लिखा आइछि बोली तो से कोड को हमें कौन करिवा क्लाइंट को डिलीवर करिवा राइट तो जदि हमें डायरेक्ट सोर्स कोड दे दबा तो क्लाइंट कौन करिवो ना इजीली से कोड को मॉडिफाई करी ता हिसाब रे लिखि परिवो राइट तो हमें नॉर्मली कौन करे ना कोड को केबे भी आउ सोर्स कोड टा खाली क्लाइंट मॉडिफाई करिवो ना सोर्स कोड देले बाय चांस किसी चांसेस अछि सोर्स कोड भी मॉडिफाई हे जे पाई जाई पारे बा किछि एरर आसी पारे किछि एरर जोति पाई की प्रॉब्लम आसीबो तो सोर्स कोड जेतला हमें डिलीवर करू क्लाइंट को जेतला हमें डिलीवर करू से सोर्स कोड को कोन करा जाय ना कंपाइल करा जाय राइट कंपाइल आउ पैकेज करा जिवो कंपाइल आउ पैकेज कराबो तो पैकेज जेतबे हे जिवो से पैकेज हे गेला पर पैकेज कोन हबो तो ई पैकेज रे कोन जनरेट करिवो डॉट जार फाइल तो डॉट जार फाइल कोन ता पई जोटा कि तमे जदी किछि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाउचो डेस्कटॉप एप्लीकेशंस किछि डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाउचो देन इट विल बी जार फाइल और डॉट वार फाइल हैला war वार फाइल हैला किछि वेब एप्लीकेशन बनाउचो वेब एप्लीकेशन सो वेब एप्लीकेशंस नॉर्मली हमें कोन वेब ऐप माने ब्राउजर द्वारा इंटरनेट कनेक्ट करि परिबा ब्राउजर द्वारा ही रन करि परिबा तटाला वेब एप्लीकेशंस तो जेनकिंस ता हमर कोन गोटे सुबश्री जेनकिंस ता कोन हमर को टाइप रो एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन ना वेब एप्लीकेशन web application perfect yeah it's actually web application because jenkins ता गोटे हमें केवल ब्राउजर थ्रू ब्राउजर वी कनेक्ट टू द जेनकिंस राइट वेब एप्लीकेशन तो हमें बुझी पाले एप्लीकेशंस जावा एप्लीकेशंस कोन आ केमती कोन बिल्ड प्रोडक्ट सो जतले बिल्ड हमें करबा ए दुईटा जनरेट करबो जदी डेस्कटॉप एप्लीकेशन हेतो तले जार जनरेट करबो जदी वेब एप्लीकेशन हेतो वार जनरेट करबो परफेक्ट हमें पैकेज विषय बुझी गले राइट तो एटे से हिसाब रे पैकेज कला तापरे वेरीफाई अछि वेरीफाई कोन रन द चेक्स एंड रिजल्ट्स of integration test to ensure quality criteria are met to verify code verify karibo install same kind of package install the package into local repository deploy done into the build environment copies the final package and the so हमें किसी कमांड सिंपली कमांड मोस्टली जतबे बिल्ड करा जाए ना तो बिल्ड करे केवल एमवीएन वेरीफाई पैकेज और क्लीन पैकेज क्लीन गोटे होची क्लीन करिवो टोटल
वर्क स्पेस बा टोटल पैकेज तापर डिप्लॉय करलो बा पैकेज कर तो हमें यूज करबा एम्बिएंट क्लीन पैकेज बा एम्बिएंट क्लीन डिप्लॉय तो ये गोटिए कमांड ही सब किछि हमर प्राय टाइम यूज हो तो ये पर्टिकुलर जस्ट गूगल सर्च करो मेवेन बिल्ड लाइफ साइकिल तुम कंप्लीटली प्रोजेक्ट डिटेल्स पाइजो आ भीतर बेसी किछि भी जानिबार नाही कोन कोन कमांड सब एते की सिंपल हो राइट ये सब किछि तुमको दरकार नहीं ये सब डेवलपर जे बिल्ड इंजीनियर डेवलपर और बिल्ड इंजीनियर सब डिटेल्स जानि तार काम करियो राइट तो तुमको बेसिकली ये पेजेस रे कमांड कोन यूज हुए बेसिकली गोटे दुईटा कमांड जानिबार अछि से कमांड ता तुम यूज करी तो मेवेन ऊपर किछि आइडियाज बेसिक आइडिया तुमको मिली गला तो लेट्स गो ahead and install maven first because आमे maven tool यूज करिबा बिल्ड करिबा पई तापय हमको इंस्टॉलेशंस दरकार राइट तो मु कोन करबी सिंपली फर्स्ट हमें दुई जगह रे maven सेटअप करिबा गोटे हला जेनकिंस सर्वर रे बैकएंड रे आ गोटे जेनकिंस यूआई रे सेटअप करिबा राइट तो गूगल डाउनलोड maven ओके डाउनलोड अपाचे maven तो हमें पर्टिकुलर को वर्जन रे अपाचे maven हमको दरकार से वर्जन हमें डाउनलोड करिबा तो सिंपली तार gz फाइल ये सब पर्टिकुलर रिलीज अछि तार gz अपाचे maven 4.0 बीटा वर्जन सो हमको बीटा वर्जन दरकार नै हमें कोन करिबा लेटेस्ट वर्जन जोटा 3.9 अछि बा 3.8 अछि हमें नै जिबा राइट तो हमें कोन करिबा तो मु गोटे कोन करछि ना मु ए टार टा नै जाउछि बाइनरी टार फाइल ठीक अछि तो जस्ट क्लिक ऑन दिस कोन हला ना एठी डाउनलोड हे गला तो मते डाउनलोड करिवार नाही तो एठी मते डाउनलोड करिवा ना एठी डाउनलोड हैला कोन हैला मो लोकल मशीन रे डाउनलोड हे गला मो लैपटॉप रे डाउनलोड हैला बट मते इंस्टॉल करिवार कोठी अछि बिल्ड सर्वर रे तो बिल्ड सर्वर हमें बनैछे कोटा को जेनकिंस को मास्टर सर्वर को बा कंट्रोल मशीन को हमें बिल्ड सर्वर बनैछे तो से हमें बिल्ड सर्वर रे मते एटा को इंस्टॉल करियर अछि तो केमति करबी राइट क्लिक करो ओके कॉपी लिंक एड्रेस आप कॉपी लिंक एड्रेस मशीन को जाओ तो cd चेंज डायरेक्टरी टू ओपीटी डायरेक्टरी को जाओ ओपीटी डायरेक्टरी ओके सो ये ओपीटी डायरेक्टरी कोन होछि ना मु maven को एटे ऑलरेडी maven अछि गोटे राइट ऑलरेडी maven अछि तो मु कोन करी मु तुमको बतै दोछि केमति कोन करिवो राइट तो maven अछि तो मु राइट क्लिक करी जाइली तो एटी मु कोन करिवो ना wget कमांड यूज करबी wget कमांड लिनक्स रे यूज टू डाउनलोड a package or a file from the internet from the url okay to download a package in the from the url तो हमें कौन करो यूज करे हमें यूज करिबा कोन wget कमांड हमें यूज करिबा तो wget कमांड यूज करके मु डाउनलोड कर देली सेठी कोन कहछि ना परमिशन डिनाइड सो हमें कौन डायरेक्टली wget में यूज कली तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग डायरेक्टली wget लेट्स यूज sudo super user right so we have to use sudo wget okay एबे डाउनलोड हे गला फाइल लेट्स गो देयर ये पर्टिकुलर टार फाइल टा हमर डाउनलोड हे गला तो ये पर्टिकुलर टार फाइल डाउन ये maven फोल्डर जोटा पुराना ऑलरेडी अछि तो मु ताकू डिलीट कर दोछि हैला ओके तो मु ये पर्टिकुलर डायरेक्टरी टा डिलीट करिया पई कोन कमांड यूज करबी rm -rf फोर्सफुली बिकॉज maven गोटे डायरेक्टरी आ डायरेक्टरी भितर बहुत सारा सब डायरेक्टरी आ फाइल अछि तो नॉर्मली rmdir कमांड काम करिवनी रिमूव डायरेक्टरी कमांड काम करिवनी तो मते फोर्सफुली rm-rf लखी maven मारली cannot remove because we need super user permission done right तो maven फोल्डर टा डायरेक्टली मु डिलीट कर देली एबे मु तुमको स्क्रैच रु देखेबी केमती तो फर्स्ट मु कोन कली wget कमांड मारी करी डाउनलोड कर देली राइट तो वर्तमान मते कोन करियर अछि ना ए फाइल टाकू जेतु टार फाइल कंप्रेस्ड फाइल अछि tar.gz एला लिनक्स रे कंप्रेस्ड फाइल तो से कंप्रेस्ड फाइल को मते कोन करियर अछि वर्तमान एक्सट्रैक्ट करियर अछि राइट तो एक्सट्रैक्ट करिया पई तो कोन कमांड यूज करबी tar कमांड यूज करबी tar-xvf पर्टिकुलर फाइल ना टाकले ता पूर्व मु sudo यूज करबी राइट सुपर यूजर sudo
ओके कंप्लीट द आर्काइव फाइल टा कोन हला एक्सट्रैक्ट हे गला जो फाइल टा आर्काइव फाइल थिला एटा एक्सट्रैक्ट हे गला राइट तो बर्तमान एक्सट्रैक्ट हे कि गोटे डायरेक्टरी ना क्रिएट कर दला तो बर्तमान जेतु मु एक्सट्रैक्ट करि सारी छी आई डोंट नीड दिस फाइल एनीमोर द स्टार फाइल राइट आई कैन डिलीट इट it should be again sudo rm okay deleted file तो एटा डिलीट हे गला परे मते एटा को rename करिवार अछि right let's make myself first sudo su changed I changed myself to root because सब बेले मते root sudo यूज करियार अछि तो बेटर मु root चेंज हे गली राइट तो मते एटा कोन करियार अछि वर्तमान ए फाइल टा को एते बड़ फाइल ना अछि ना तो मते केवल मावेन दबार अछि तो मावेन दबार अछि तो मु कोन कंपनी रीनेम करिया पई कोन डायरेक्टरी रीनेम करिया पई कोन कमांड यूज कराबो how can I rename this directory mb anyone except Satish and Swarup you guys I think know Rajasri or Subhasri any one of you can tell I want to rename this directory MB yes तो हमें mv कमांड यूज करिबा रीनेम करिबा पई ठीक अछि mv आउ मु जाउछि एक एंटायर डायरेक्टरी नाटा यूज करिबा माने राइट हे गला तो छोटो शॉर्ट फॉर्म रे mvn क्रिएट हे गला राइट वर्तमान एई mvn जो हेला हमें पे जो cd से डायरेक्टरी की जीबी ए फोल्डर भीतर देखो आरा जहा दरकार मेवेन रो सबु बिल डायरेक्टरी कॉन्फ़िगरेशंस सबु आ भीतर अछि राइट मेवेन फोल्डर भीतर डायरेक्टरी भीतर तो वर्तमान मते मेवेन इंस्टॉलेशन सरी गला तो मते कोन करिवार अछि मते सही सेटअप टा मते कोडी जेनकिंस रे करिवार अछि राइट तो मु जेनकिंस कुछ भी कोडी फर्स्ट डैशबोर्ड जाइकरी मैनेज जेनकिंस ओके मैनेज जेनकिंस गली मैनेज जेनकिंस रे जाइकरी कोड जीवा पडियो मते manage jenkins then you have to go to the tool sections कारण मते टूल गोटे इंटीग्रेट करियर अछि राइट ऐड करियर अछि कॉन्फ़िगर करियर अछि तो टूल को टूल सेक्शन गली ग्लोबल टूल सेक्शंस एडी जेडीके हमें देखिले गिट देखिले ऑलरेडी जेडीके इंस्टॉल हेछि राइट तो हमें जेडीके देखिले गिट भी देखिले तो हमें वर्तमान मावेन इंस्टॉलेशंस ऑलरेडी मावेन इंस्टॉलेशंस लोकल मावेन आड तो जदि एटा नथिबो तमे कोन करबो सपोज मु डिलीट कर देली डिलीट हे गला तो फर्स्ट मावेन इंस्टॉलेशन ऐड मावेन तो एटी मु देबी गोटे ना देबी सपोज लोकल मुदली लोकल मावेन देली ना देली तापरे ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशंस तो हमें तो ऑटोमेटिक करिने हमें मैनुअली इंस्टॉल करले आइदर तमे एटी ऑटोमेटिक इंस्टॉल करि परिबो तो बट एक्चुअली कंपनी माने करे ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन करंती से माने मैनुअली तांकर जो वर्जन दरकार सही वर्जन से माने सिलेक्ट करंती आ यूज करंती तो देखा सेमती भी जदी हमें देखिबा हमें लेटेस्ट वर्जन कोन 3.99 वर्जन ऑलरेडी हमें मैनुअली डाउनलोड करी इंस्टॉल कर देइछे राइट तो मु एटा अनसिलेक्ट कर दोउची दरकार नै तो हमें तो मैनुअली इंस्टॉल कले को डायरेक्टरी इंस्टॉल कले /opt maven यही पर्टिकुलर डायरेक्टरी हमरो मेवेन फॉर्म डायरेक्टरी राइट अछि देन हमर मेवेन सेटअप हे गला राइट सेव तो वर्तमान हमें जो प्रोजेक्ट बनिबा को जाउचे तो ता भीतर दरकार थिला जहा हमर कोन दरकार थिला जावा मेवेन गिट तीनटा तो मोर बिल्ड सर्वर रे सेटअप हे गला राइट तापरे कोन करियार अछि गोटे टॉमकैट सर्वर गोटे क्रिएट करियार अछि गोटे टॉमकैट सर्वर क्रिएट करिया अछि तो टॉमकैट सर्वर पई कोन करछि ना मु मते गोटे नुवा सर्वर क्रिएट करियार अछि राइट लेट मी लॉग इन टू द AWS फाइन तो मो अकाउंट लॉग इन कर देली issue okay here already one machine is running let me check which machine it is like a dev server this dev server machine is running so let it run no problem okay
Fine. Let me go ahead and create one more machine here. So the machine name I'll give it as Tomcat server. Machine name I gave it as Tomcat server. So let's select as Amazon Linux. Okay. Then go with Linux 2. Sometimes Linux 23 causes some problems. So let's select Linux 2. Okay, I'm select collect T2 micro. Okay, T2 micro sufficient our Ansible demo V12 जो कीटा मो पाखरे अवेलेबल अछि से कीटा मु चूज कली आ तमे जानिछ very well how to create the Linux machines or instance, right? Virtual machines. So मु बतौनी तुमको security group 8 GB ମୋ ପାଇଁ sufficient ଅଛି Tomcat मते अधिक दरकार नहीं, right? Go ahead and launch instance. तो बर्तमान गोटे instance login होची, right? Let's load it. Just started होची, starting होची, right? In pending status रे अछि. Okay, it started and तो मु बर्तमान तुमको बताइबी कोन Tomcat server रे केमती आमे installation Tomcat server रे कोन first Java install करिवा तापर पुनी Tomcat server केमती install करिवा ता विषय रे केमती बताइबी, ठीक अछि. Now let's get this. Okay, connect right? Let me little increase the point here. Send settings, appearance change. Suppose 60. तो मते कौन करियर अछि वर्तमान Java install करियर अछि. Let me check whether Java is installed already or not. Java is not there. तो मते Java कोडी हमर Amazon Linux 2 रे Java installations करियर अछि. तो बेसिकली Java हमको कौन दरकार को वर्जन रो Java दरकार latest version रे चलिबो, right? So what I can do, I can go there, install Java Linux 2 machine रे हमरो install करियर अछि, right? 11 हो कि 17 हो जो latest version जहाँ भी तमे install करियो, either 17 or 11. तो install the headless 17 install head full Java. Okay, so what a past dita JDK install करियर अछि Amazon 23. एटा हला केवल Amazon 23 जदि तमे यूज करछो ए कमांड यूज करिवो आ Amazon जदि 2 यूज करूछ ताले ए कमांड यूज करिवो, right? A particular options based, right? So simple things sudo yum install done. Just hold on for a few seconds. Okay, so Java installations is done now. Java installation is done now. So if I just do Java hyphen version, you can find it out. See, Java 11 version is installed. Java 11 version is installed now. So Java install करना तो मतलब मते Tomcat install करियर अछि, right? The Tomcat installations, let me show you how we can do the Tomcat installations. So install or मुझे download Tomcat. Tomcat भी गोटे Apache server. तो मु Tomcat suppose 8 download करूछि. Apache Tomcat, see? Apache Tomcat. तो इटा Apache Tomcat रो मते 8.5 or 8 version जेकोनसी अछि. तो either तमे tar file यूज जेमति कि मु देखितल tar file कर परियो नले यूज कर परियो नले binary distributions zip file नले tar file तो मते tar file नंबर अछि. Copy link address, go to the machine. So a particular machine रे मते यूज करे अछि कोन जा Tomcat ता install करे अछि, right? तो सिमिलरली मु एटी कोन करिम ना opt फोल्डर को जिबी opt डायरेक्टरी तो एटी मु कोन करिवे सेम थिंग जेमति यूज करतली sudo wget. तो एई मोमेंट टाइम इंस्टॉल हेतला कोन बिल्ड सर्वर रे तो एटा Tomcat सर्वर हमर जोटा कि टेस्टिंग सर्वर बा स्टेजिंग सर्वर मु बनौछि.
right? तो कौन कहला HTTP request connecting to this connected 404 not found মানে এই যে লিংকটা আমি দিলে এটা 404 not found কইছি ঠিক আছে তো তার আছে ফুল ডকুমেন্টের ডেপ্লয়ার declaration named customer access sudo wget okay so deployer version tomcat 9 हमें 9.0.95 डाउनलोड कर ले ठीक है तो if I go and check here see we got it the similar way हमें जंती maven ପାଇଁ करतले maven ପାଇଁ सेमती tomcat ପାଇଁ भी यूज करबा राइट sudo su यूज कर देली तो फर्स्ट मते कोन एक्सट्रैक्ट करियर अछि tar hyphen xvf एक्सट्रैक्ट हो गला तो बर्तन ये फाइल हमको दरकार नहीं लेट्स डिलीट इट rm delete the file yes done तो एटा को मते रिनेम करियर अछि mv similar way छोटो फॉर्मेट रे tomcat दे देली राइट खाली tomcat यूज करली हो गला tomcat तो एठी हमें किछि चेंजेस करबा tomcat रिमेंबर tomcat रो डिफॉल्ट पोर्ट हैला 8080 so another question what is the default port of Jenkins can anybody answer what is the default port of Jenkins 8080 yes so 8080 तो आमे जदी Jenkins आउ Tomcat गोटे सर्वर रे रखिबा तले कोन करबा पड़िबा हमको वो क्वेश्चन हैला जदी आमे Jenkins आउ Tomcat गोटे सर्वर रखिबा को चाहिबा त हमको कोन करबा पड़ी पोर्ट चेंज करबो यस तो हमें कौन करबा ना पोर्ट चेंज कर देबा आइदर Jenkins रो पोर्ट चेंज करबा नहले Tomcat रो पोर्ट चेंज करबा ठीक अछि Jenkins रो पोर्ट चेंज कर दो नहले Tomcat रो पोर्ट चेंज कर परिबा तो जेहेतु हमें Tomcat ओटे डिफरेंट सर्वर रे टेस्टिंग सर्वर क्रिएट करछे तो एठी डिफॉल्ट पोर्ट 8080 हमें यूज करबा किछि प्रॉब्लम नाही कारण आउ का सहित ये कॉन्फ्लिक्ट होबार नाही राइट तो बर्तमान हमें Tomcat इंस्टॉल डाउनलोड करि साइछे तो बर्तमान मते Tomcat को एग्जीक्यूट करिवार अछि राइट सो लेट्स गो टू Tomcat folder okay Tomcat folder पे जाउछे तो here we have leave acha we got the deployer version where there is no bin directory so this is not the correct package then this is not the correct package so let's go ahead and get the core package so because okay we got the core package now so deployer package does not have anything so we don't need this deployer package remember we will get the core package let's go and check this core package also let me remove this Tomcat rm hyphen rf remove right let's unpack this right extract this file so what is the command we have to use tar hyphen xvf okay then this is the file which we need actually the core file we need not the deployer file we need the core file so for 8.5 version the core file was not found that's why we went with deployer 1 but deployer 1 is the different file which is not required we cannot use it so core file we downloaded the tar.gz file the tar file of 9.0.95 versions now we have extracted it let me quickly do the same things repeated okay then now if I go to the Tomcat folder here okay so here we have the bin directory and here also we have web apps so web apps directory where the web apps folder or directory where our actual applications will be deployed
our applications is going to be deployed under this web apps folder. Then the Tomcat server will run that application, right? So, and config folder is having some XML file, right? This config folder or directory is having some XML file which is required to be edited, modified based on the requirement. I'm not going to touch it now. I'm going to do some setup in a different way. If it is working, it's fine, or not, then we'll change it, right? Then binary bin directory, right? So bin directory actually I mean सब काम bin directory ही करिबा प्राय काम तो bin directory आमे किछि executable files दरकार जहाँ तो आमे जावा ऑलरेडी इंस्टॉल करि सारिछे तो मते एठी किछि स्टार्टअप फाइल अछि जोटा कि टॉमकैट सर्वर स्टार्ट करिबा पई आमे यूज करिबा राइट तो मु catalina.sh यूज करूची तो एठी किछि sh फाइल तमे पाइबो आ किछि bat फाइल पाइबो तो bat फाइल हला कोन bat script sh हला कोन shell script बैट है बैच स्क्रिप्ट है विंडोज पाई तो टॉमकैट आमे विंडोज मशीन रे भी रन करि परिबा तो ता पई हमको एक पर्टिकुलर बैच स्क्रिप्ट रन करियार अछि जेतो आमे लिनक्स इंस्टॉल करछि हमको शेल स्क्रिप्ट रन करिबा राइट तो मु कोन करबी catalina.sh start तो व्हाट इज सेज tomcat server started तो tomcat server मु एक्सेस केमिति करबी तो तार आईपी एड्रेस आउ पोर्ट नंबर राइट तो हमें आईपी एड्रेस चेक कर दवा आईपी एड्रेस पब्लिक आईपी एड्रेस ता पूर्व हमें चेक कर दवा 8080 व्हाइट लिस्ट अछि ना नाही कोड चेक करबा सिक्योरिटी ग्रुप रे राइट so we can check this security group and make sure that 8080 yes 8080 is whitelisted right जदि whitelist हेइनी तो हमें edit inbound rule करिकरी तुम जानिछ केमति कोन व्हाइट लिस्ट करिवा राइट 8080 व्हाइट लिस्ट कर दबो तो 8080 इनबाउंड रूल रे ऐड करि सरला परे हमें कोन करिवा ना तार आईपी एड्रेस ता यूज करिवा पब्लिक आईपी एड्रेस डिटेल्स रे जाओ टॉमकैट सर्वर रो पब्लिक आईपी एड्रेस आउ हमें एठी पब्लिक आईपी एड्रेस और पोर्ट नंबर दबा 8080 पोर्ट नंबर हैला 8080 राइट इटा इंटर yes see हम टॉमकैट सर्वर वर्तमान स्टार्ट कर देला हमें इंस्टॉल कले आ टॉमकैट सर्वर रन भी होची तो अपाची टॉमकैट नहीं नाउ ए टॉमकैट सर्वर रे हमर एक्चुअली एप्लीकेशन ता हमें डिप्लॉय करबा तो वर्तमान मु कोन कली दुईटा गोटे टॉमकैट सर्वर बिल्ड सर्वर रेडी कर देली राइट जोटी कि हमर एक्चुअल कोड बिल्ड हबो आ जोटी डिप्लॉय हबो डिलीवर हबो राइट सेठी मु रेडी कर दे तो वर्तमान आज क्लास रे हमें जेतु टाइम हबनी तो S3 कथा हमें करे देखिबा तो नेक्स्ट क्लास रे वर्तमान मु आज ए पार्ट टा डिलीवर करी देखौची कोडी कि टॉमकैट सर्वर को पार्ट टा ए पर्टिकुलर तळ पार्ट टा देखौची जेनकिंस टू टॉमकैट सर्वर तो ए पार्ट टा हमें डिलीवर्ड नेक्स्ट क्लास रे देखिबा केमदी S3 बकेट को डिलीवर कराउछ राइट तो फर्स्ट लेट्स गो अहेड एंड डू द चेकअप्स हियर तो मैनेज जेनकिंस रा किछ दरकार नाही हमें डैशबोर्ड जिबा एबे गोटे जॉब क्रिएट करबा एबे गोटे जॉब क्रिएट करबा तो लास्ट क्लास रे हमें कोन करतले ना डेमो पाइपलाइन जॉब क्रिएट करतले राइट तो ये डेमो पाइपलाइन जॉब को लेट्स डिलीट दिस पाइपलाइन प्रोजेक्ट डेमो पाइपलाइन डिलीट हे गला राइट तो मते कोन करियर छै एबे गोटे न्यू प्रोजेक्ट बनेबी सपोज डेमो जावा आप डिप्लॉय डेमो जावा आप डिप्लॉय से छोटो जोटे जस्ट ना गोटे देली पाइपलाइन जॉब क्रिएट करिवा राइट ओके राइट तो जावा एप्लीकेशन गोटे ना दे दोचे बिल्ड एंड डिलीवर बिल्ड एंड डिप्लॉय टू टॉमकैट सर्वर ओके तो हमको कोन पाइपलाइन स्क्रिप्ट आनिवार अछि कोठू सोर्स कोड मैनेजमेंट रो आनी तो वर्तमान मते कोन करियर अछि जेनकिंस फाइल यूज करियर अछि तो सोर्स कोड मैनेजमेंट कोन हम यूज करबी गिट जेमति काली बतैतरी गिट यूज करबा तो एटी हमको प्रोजेक्ट रेपोजिटरी जो जावा प्रोजेक्ट हमें बिल्ड करबा तार रेपोजिटरी यूआरएल हमको दरकार
तार repository URL तो normally तमे developer मानक सहित developer का सहित कथावार्ता आइकरी बा collaboratively you have to work with your developer teams, right? And you have to get the URL, project URL, and you have to do the setups, right? The project URL you need it. Now आमे कौन करिबा ना project URL पे आमे GitHub repository जिबा तो मु देखौची जो project आमे try करि परिबो गोटे अछि रंजीत फॉर GitHub मो repository तमे DevOps web गोटे छोटो जावा एप्लिकेशन है दुईटा एप्लिकेशन जावा रो अछि डेवऑप्स वेब गोटे अछि आ गोटे लॉगिन वेब ऐप अछि तो लॉगिन वेब ऐप डेटाबेस जावा विथ माइस्क्ल डेटाबेस रो एप्लिकेशन ता आ एटा सिंपल जावा एप्लिकेशन ता राइट एटा लॉगिन वेब ऐप अछि जावा माइस्क्ल जोटा कि हम गोटे प्रोजेक्ट करबा माइस्क्ल प्रोजेक्ट सहित ता सहित एटा मु तुमको बतै देबी आ गोटे अछि डेवऑप्स वेब तो एटी हम डेवऑप्स वेब रे जिबा तो एटी जेकोसी पर्टिकुलर गोटे मु बिल्ड करबा को चाहूची गोटे particular branch, right? So let me go ahead and get one particular branch. Suppose B11 Java deploy already use କରିଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠୁ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ଗୋଟେ feature branch create କରୁଛି feature Java deploy ତ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର जोटा कि application code, right? Java application जदि मु source folder को जाउची एटी complete Java application सबु अछि वेब एप्स रे गले सबु Java code लेखा आइछि, right? जोटा कि तमे यूज करिवो Java build करिवा पाई तो पर्टिकुलर सोर्स डायरेक्टरी सब मेन रे सब अछि तो डेवऑप्स जो वेब टा मु रेपोजिटरी बनेछि रेपोजिटरी मेन रे हमर जेनकिंस फाइल जेतो हमें ଗୋଟେ जेनकिंस फाइल बिल्ड करिवा राइट आ तापरे जावा एप्लिकेशन रो बहुत इंपोर्टेंट फाइल गोटे अछि pom.xml pom.xml so ई pom.xml nothing but the dependencies file तो जावा पाई जो डिपेंडेंसीज दरकार जो लाइब्रेरी डिपेंडेंसीज बाइनरीज फाइल दरकार राइट तार सब डिपेंडेंसीज प्रॉपर्टीज सब डिपेंडेंसीज एटी सेटअप कराई रखाई छी कोन कोन टूल्स दरकार राइट जावा बिल्ड पाई कोन कोन सब बाइनरी फाइल दरकार कोन कोन लाइब्रेरीज दरकार सब सेटअप कराई छी आ ये pom.file तमे किछि काम करिवनी तुमको के दबो डेवलपर किछि प्रॉब्लम आसला जावा प्रोजेक्ट बिल्ड रिलेटेड इश्यूज जदि किछि आसला तमे जावा डेवलपर सहित डायरेक्ट कांटेक्ट करिवो से माने तंकर सेटअप करिवे राइट सो हमें pom.xml हमें पाई गले तो तुमको भी पचारि पारंती क्वेश्चंस व्हाट इज द pom.xml तो तमे जदि कहबो मु हम जावा प्रोजेक्ट रे काम करिछि जावा रे करछि तुमको पचारि पारंती जावा रो बेसिक फाइल कांसेप्ट जेंति कि pom.xml settings.xml right the pom.xml contains all the dependencies and dependencies file details which is required for the applications to build similarly settings.xml also contains similar kind of all binary dependencies all the details तो हमको दरकार pom.xml जोटा कि अछि एटा जदि नथिबो त हम जावा एप्लीकेशन बिल्ड हबोनी एटा निहाती हमको pom.xml दरकार राइट तो हमें वर्तमान कौन करिया हमर जेनकिंस फाइल देखिबा तो जेनकिंस फाइल रे हमें कौन करिया फर्स्ट बिल्ड करिबा जो स्टेजेस हमें मोइटी बतैछि हमको कौन कौन दरकार ए पाई हमको बिल्ड दरकार हाउ डिलीवर दरकार राइट तो फर्स्ट बिल्ड करिया पे हमें कोड लिखिबा तो ई कोड ता वर्तमान हम तुमको बतै दउछि केमति कोड लिखिबो okay let me copy this entire code okay so what I'm going to do here ये जो completely मु तुमको पर्टिकुलर एक प्रोजेक्ट टा बनेबा चाहूची तो मु एठी कोन सिंपल पाइपलाइन स्क्रिप्ट लिखि देली राइट तो मु अच्छा ठीक अछि मु आपको सब डिलीट भी कर दउची ओके ये सब मते दरकार नाही मु डिलीट कर दउची तो तुमको स्क्रैच रु बतेबी केमती करियो राइट खाली स्ट्रक्चर टा मु नउची बाकी कोड हमें स्क्रैच रु करियो राइट हे गला तो सक्सेस टा था इस स्टेप टा भी क्लीन पैकेज तभी हमें लिखिबा ओके
तो एटा वर्तमान टूल्स सेक्शंस को भी डिलीट कर देली तो ओके लेट्स एटा हला कोन हमर गोटे स्ट्रक्चर हमें पाई गले सिंटैक्स फास्ट लिखि देले खाली जो सिंटैक्स ता हम तुमको बतै देली पाइपलाइन केमते लिखियो पाइपलाइन स्क्रिप्ट एजेंट एनी एजेंट मींस एनी अवेलेबल एजेंट वर्तमान हम पाखे केवल मास्टर एजेंट अछि तो बा मास्टर मशीन अछि तो मास्टर मशीन रे बिल्ड हो अब मास्टर मशीन रे ही बिल्ड करियो को हमें चाहू छे कारण हम मास्टर मशीन को हमें बिल्ड सर्वर भाबे बनै छे राइट तो स्टेजेस रे हमें कोन आसी फर्स्ट बिल्ड करबा तो बिल्ड पई हमें कोन यूज करबा टूल्स यूज करबा राइट तो टूल हमें को टूल यूज करबा बिल्ड टूल कोन मेवेन टूल राइट सो मेवेन टूल पई हमें कोन करबा बिल्ड टूल यूज करबा ता पे हमें कोड लिखबा कोन टूल्स सेक्शन भितर मेवेन आउ हमें देचे कोन लोकल मेवेन सो लोकल मेवेन कोन लोकल मेवेन कोड असला की कहबो हमें यूज करूचे मेवेन राइट लोकल मेवेन एटा कोड देइचे हमें जदि टूल्स सेक्शंस जीवा राइट लेट मी सेव इट लेट मी गो देयर टूल्स सेक्शंस को जीवा माने जेनकिंस टूल्स राइट तो सेति पे मु तुमको कहथिनी बारंबार जो सेक्शन टा हमें यूज करूचे जो नेम टा एटा ए नेम टा हमको दरकार है कोडिंग टाइप रे जतला हमें स्क्रिप्ट ऑटोमेशन करबा तो स्क्रिप्ट रे हमको ए नेम दरकार ए नेम कॉल कला माने सेटा को कॉल करिवो राइट तो सिमिलरली मेवेन रे भी हमें कोन लोकल मेवेन ए लोकल मेवेन टा हमें कॉल करबा कॉल कले से कोडी ए मेवेन पाथ रे जाई के एग्जीक्यूट होबो बुझी पारलो क्लियरली राइट तो लेट्स गो हियर तो ए पर्टिकुलर लोकल मेवेन ए तो एक टूल टा हमें यूज करबा तो नेक्स्ट कोन होची ना हमें कोन बिल्ड करबा टूल सेक्शन रे हमें कोन यूज करबा जेडीके हमर कोन छी एटा गोटे हला हमर कोन हमर हला एटा गोटे जावा एप्लीकेशंस हमर जावा ऑलरेडी इंस्टॉल अछि तो ओके फाइन तो बिल्ड जावा एप्लीकेशन तो बिल्ड स्टेप्स लिखिबा एठी तो जेहेतु हमें बिल्ड करबा कोडी हमर मेवेन इंस्टॉल हेछि लाइनक्स हला गोटे सॉरी बिल्ड हेछि जेनकिंस सर्वर रे बिल्ड सर्वर और जेनकिंस सर्वर डाला हमर लाइनक्स मशीन तो लाइनक्स मशीन ता हमें यूज करिया पे हमें sh कमांड यूज करिबा राइट sh कमांड यूज करिया तो sh रे हमें कोन यूज करिबा maven ambient clean और पैकेज जोटा कि हमें देखिथिले लाइफ साइकिल रे राइट ए लाइफ साइकिल रे maven लाइफ साइकिल हमें क्लीन पैकेज देखिथिले राइट पैकेज ता हमें पैकेज करिया क्लीन करिकरी पैकेज करिबा राइट तो क्लीन पैकेज तो वर्तमान ए कमांड कोन करबो ना हमर बिल्ड करबो तो बिल्ड सरिला परे मु कोन कहूची ना पोस्ट सेक्शन रे आर्काइव करूची तमे चाहिले पोस्ट सेक्शन को रखि पारिबो बा डिलीट भी कर पारे किसी दरकार नै जदी पोस्ट सेक्शन तो पोस्ट सेक्शन रे मु कोन कहूची ना पोस्ट दिस बिल्ड I am going to archive the artifact की कोन होबो एठी war file dot war file सेटा हो artifact और टारगेट फोल्डर डायरेक्टरी क्रिएट हबो तो वर्कस्पेस रो टारगेट डायरेक्टरी क्रिएट हबो तो एटा को मु आर्काइव करूची आर्टिफैक्ट्स को आर्काइव कर दोची राइट पोस्ट सेक्शन सरिला हमर गोटे स्टेज कंप्लीट बिल्ड पार्ट कंप्लीट हे गला बिल्ड पार्ट परे हमको नेक्स्ट आसीबो डिप्लॉयमेंट पार्ट तो हमें डिलीवर करबा बा डिप्लॉय करबा तो ता पई मु तुमको बतै दोची ए डिप्लॉय स्टेज कोड ता तमे लिखिबो केबे गोटे टू वेज रे तमे करि परिबो गोटे एससीपी कमांड यूज करी सिंपली कॉपी करि परिबो वेब ऐप फोल्डर को जोटा कि बहुत इजी हबो आ हमको जस्ट गोटे की शेयर कर दे हमें जस्ट ये ट्रांसफर कर देले हमर एग्जीक्यूट हे जो काम सरला बट आउ गोटे वे रे तुमको बतौची हाउ वी कैन डू दैट वन बाय यूजिंग द स्निपेट जनरेटर तमे गोटे कोड जनरेट करियो राइट तो ता पई कोन करा हबो हमें जाओ एटी की तो ए पर्टिकुलर कोड रे ओके तो हमें कौन दरकार थिला हमर कोन रिपोजिटरी यूआरएल राइट तो हमें रिपोजिटरी यूआरएल टा फर्स्ट आने वाली तो ए पर्टिकुलर रिपोजिटरी यूआरएल हमको दरकार राइट कोड कॉपी रिपोजिटरी जेहेतु एटा पब्लिक
किछि क्रेडेंशियल मागिबनी सरला तो को ब्रांच को हमको बिल्ड करियर अछि से ब्रांच इंफॉर्मेशंस भी हमें दबा राइट को ब्रांच बिल्ड करियर अछि हमको फीचर हाइफेन B12 जावा डिप्लॉय ए पर्टिकुलर ब्रांच का हमर बिल्ड हबो कोन फीचर B12 जावा डिप्लॉय ए पर्टिकुलर ब्रांच टा हमर बिल्ड हबो ता सहित जेनकिंस फाइल जोटा कि हमें वर्तमान लिखुचे ए जेनकिंस फाइल टा हमें अपलोड करिवा राइट तो जेनकिंस फाइल रे हमें कोन करिया डिप्लॉय टू टॉमकैट सर्वर तो हमें कोन करिया अछि टॉमकैट सर्वर को डिप्लॉय करिया पई कोड मु तुमको बतौची केमती कोड जनरेट करिवो असलो तो एठी गोटे देखिवो पाइपलाइन सिंटैक्स गोटे अछि पाइपलाइन सिंटैक्स राइट क्लिक दिस पाइपलाइन सिंटैक्स तो ये पाइपलाइन सिंटैक्स तुम कौन करिवो ना गोटे सिलेक्ट करिवो कंटेनर ओके तो गोटे कंटेनर सिलेक्ट करिवो कंटेनर वा डिप्लॉय वार ER2 कंटेनर डिप्लॉय वार ER2 कंटेनर ओके जस्ट चेक ABCD deploy var ER2 ए कंटेनर तो एटा हमको दरकार कंटेनर डिप्लॉय करियार अछि तो कोन डिप्लॉय करियार अछि var फाइल स्टार स्टार स्लैश स्टार डॉट var माने कोन हमको गोटे डायरेक्टली बैक जाई करी var फाइल टा को आनियार अछि केवल var फाइल टा राइट कारण हमें तले बिल्ड करिबा से कोन गोटे ना आउ डॉट var फाइल जनरेट करिवो से var फाइल टा को हमको आनियार अछि तो कॉन्टेक्स्ट पाथ किछ दवा दरकार नहीं कॉन्टेक्स्ट पाथ ऑटोमेटिकल तमे किछ दवा दरकार नहीं कारण से ऑटोमेटिकली वेब ऐप फोल्डर रे राइट हम तो लीव कर दियो तो एठी हमें कोन करबा ना ये जो फाइल हमें करिया तार गोटे क्रेडेंशियल हमें दवा क्रेडेंशियल्स तो ऐड कंटेनर तो कंटेनर डिटेल्स ऐड करिया तो हमें कोन टॉमकैट 9 यूज करूचे राइट तो टॉमकैट 9 सिलेक्ट कर कंटेनर ऐड कली तो गोटे क्रेडेंशियल्स क्रिएट हो राइट टॉमकैट क्रेडेंशियल्स यूज करिया तो हमें टॉमकैट क्रेडेंशियल किछि तो यूज करिने क्रिएट करिने तो मु तुमको बतौची कि टॉमकैट क्रिएट केमिति करबा ता पूर्व हमको टॉमकैट यूआरएल दरकार तो टॉमकैट यूआरएल हमर कोडा रहइबो एटा हला हमर टॉमकैट यूआरएल राइट कॉपी इट पाइपलाइन जनरेट एटा टॉमकैट यूआरएल देली एटा हला हमर टॉमकैट यूआरएल राइट एटी हमें डिप्लॉय करिवा राइट तो ये क्रेडेंशियल्स का यही यूआरएल जो डिप्लॉय टॉमकैट रो क्रेडेंशियल हमें क्रिएट करबा तो केमती करबा तो मु एटी बिन डायरेक्टरी गली ता पूर्वरु कॉन्फ डायरेक्टरी के जीबी कॉन्फ ए कॉन्फ़िगरेशन डायरेक्टरी हमें पाइबा गोटे सर्वर डॉट एक्सएमएल आ गोटे अछि टॉमकैट यूजर डॉट एक्सएमएल तो सर्वर डॉट एक्सएमएल रे हमें जदी पोर्ट नंबर चेंज करबा तो सर्वर डॉट एक्सएमएल रे चेंज करबा यदि यूजर किछि क्रेडेंशियल क्रिएट करछे तो हमें टॉमकैट हाइफेन यूजर्स डॉट एक्सएमएल रे क्रिएट करिया राइट तो एठी बेसिकली 30 सेक्शंस को जस्ट कंप्लीट डाउन टू पळेसो लाइन ता पर्टिकुलर कमेंट हेगी अछि तो मेडा को अनकमेंट कर दोछि ओके तो एठी कोन हला ना मु दुईटा रोल क्रिएट करिवा पड़िबा हमको आ से दुईटा जाक रोल को हमें टॉमकैट सेटअप करिवार अछि दुईटा जाक रोल को हमको टॉमकैट रे सेटअप करिवार अछि राइट तो लेट मी शो यू जो रोल नेम अछि टॉमकैट जगह रे मते कोन करिवार अछि मैनेजर स्क्रिप्ट दवार अछि स्क्रिप्ट ओके आ गोटे दे दोछि मैनेजर GUI आ गोटे दे दबा मैनेजर GUI ओके माने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी कनेक्ट कर परिबो तो तापे पासवर्ड हमें यूज सेटअप कर दबा पासवर्ड जे कोन सी मैनेजर स्क्रिप्ट मैनेजर GUI ओके तो पासवर्ड यूजर नेम रहला टॉमकैट लेट इट बी टॉमकैट और पासवर्ड किछि भी पासवर्ड एठी रखि दे पारबी किछि जदी इक्वली रखिले पासवर्ड ना मस्ट बी चेंज एट लिखि छी राइट तो सपोज सीक्रेट और रोल्स तो एठी हमें कोन करबा ना दुईटा जाक रोल्स हमकु सेटअप करिया पड़ियो हमर दुईटा जाक रोल्स देइछे कोन मैनेजर स्क्रिप्ट गोटे रोल ओके मैनेजर स्क्रिप्ट तो हमकु ये मैनेजर स्क्रिप्ट एठी दवार अछि ता सहित कोमा
हमको दबार अच्छी मैनेजर 2 ओके लिखिदा मैनेजर स्क्रीन मैनेजर रोल्स सिलेक्ट ହେଇଗଲା रोल्स ଦେଇଦେଲେ डन ଆଉ ଏ ତଳ ଦିଟା ଲାଇଭ ରୋଲ हमको दरकार नहीं ହେଇଗଲା राइट तमे कोन कले दुईटा रोल क्रिएट कले यूजर नेम टॉमकैट कले पासवर्ड भी सीक्रेट देले राइट पासवर्ड रखले तो ए पर्टिकुलर टॉमकैट को हमें सेट करे बर्तन यूजर हमें सेट कर देले लेट्स सेव इट सेव हो गला टॉमकैट हो गला सेव तो टॉमकैट सेव यूजर सेव हो गला मतलब टॉमकैट को रिस्टार्ट कर दवा पड़िबो जेतु मु चेंजेस कली कॉन्फ़िगरेशन फाइल रे राइट तो मु bin डायरेक्टरी जाइकरी कोन catalina.sh stop स्टॉप हो गला राइट तापर पुणी ଏବେ स्टार्ट कर दवा स्टार्ट टॉमकैट स्टार्ट है डन तो हमर टॉमकैट स्टार्ट हो गला सर्वर तो बर्तमान कौन अच्छी ना जो क्रेडेंशियल आम क्रिएट कले तो सही क्रेडेंशियल को हमें सेट करवा एटी राइट तो गो टू जेनकिंस ग्लोबल क्रेडेंशियल्स काइंड यूजर विथ पासवर्ड स्कोप ग्लोबल यूजर नेम कौन थिला टॉमकैट राइट पासवर्ड कौन थिला सीक्रेट तो ये आईडी दे देबी टॉमकैट B12 descriptions टॉमकैट B12 आ गोटे आईडी में क्रिएट कली add हो गला राइट क्रेडेंशियल क्रिएट हो गला तो सही क्रेडेंशियल बर्तमान B12 टॉमकैट वो ऐड कर देली राइट देन टॉमकैट कंटेनर डिटेल्स मु कौन कली को स्निपेट जनरेट रे कोडा अच्छा तो वर्तमान ए जो विषय मु बताउतली डिप्लॉय वार टू ईयर तो डिप्लॉय वार टू ईयर तमे जदी एठी नथिबो तमे कोन करबा पड़िबो के कहबो जदी ए पर्टिकुलर ऑप्शन एठी जदी अवेलेबल नथिबो देन व्हाट वी हैव टू डू ऑलरेडी बतई सारिछि लास्ट क्लासेस रे लास्ट टू लास्ट क्लासेस रे जदी किछि गोटे ऑप्शन किछि गोटे फीचर्स नथिबो त हम कोन करबा पड़िबो सही रिलेटेड प्लगइन इंस्टॉल करबा पड़िबो हमको राइट सही रिलेटेड प्लगइन इंस्टॉल करबा पड़िबो हमको प्लगइन इंस्टॉल कले हमर ए पर्टिकुलर ऑप्शन ता हमको अवेलेबल आसी जीवो राइट तो सिलेक्ट कली वर्क फाइल देली टॉमकैट इंफॉर्मेशंस दियाला राइट डन तो जनरेट पाइपलाइन स्क्रिप्ट आसी गला हमर पाइपलाइन स्क्रिप्ट डन तो एटा को वर्तमान कॉपी करो वेरी सिंपल बहुत सिंपल अच्छी राइट डिप्लॉय अडॉप्टर्स आसी गला तो एटा को नेकरी मते वर्तमान हमर ए जो स्क्रिप्ट हमें लिखुचे ए स्क्रिप्ट स्टेप रे मते ऐड करिया अछि सिंपल सरला डिप्लॉय अडॉप्टर्स टॉमकैट 9 हम यूज करछ बस हमर कोन हैला जेनकिंस फाइल वर्तमान रेडी हे गला जेनकिंस फाइल वर्तमान रेडी हे गला राइट बिल्ड पार्ट हे गला डिलीवर पार्ट भी हे गला राइट तो लेट्स गो अहेड कॉपी दिस एंटायर पार्ट तो हमें कोन करिया अछि वर्तमान हमको जीवार अछि B12 जो ब्रांच क्रिएट करथिले जेनकिंस फाइल रे एडिट करियर अछि राइट बा नुवा जेनकिंस फाइल क्रिएट करियर अछि डिलीट तो नुवा जेनकिंस फाइल ऐड कर देली राइट commit the file commit changes हे गला तो हमरो जेनकिंस फाइल रेडी हम स्क्रिप्ट लिखि देले राइट हम स्क्रिप्ट वर्तमान रेडी तो हमें कोन करबा ना जाइकरी पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट हमें वर्तमान सेव कले राइट तो हमको बिल्ड करी बिल्ड स्टार्ट हैला फर्स्ट चेकआउट करिवो राइट चेकआउट कला चेकआउट करे एम्बिएंट क्लीन पैकेज बिल्ड स्टार्ट हे गला देखो कंप्लीट बिल्ड ता बिल्ड करिवा पूर्व से कोन करछ ना डिपेंडेंसी फॉर्म सी बिल्डिंग ए कस्टम प्रोजेक्ट यूजिंग दिस फ्रॉम pom.xml तो pom.xml रु जो प्रोजेक्ट नाम मु देइछि डेवऑप्स वेब एटा कंपनी नेम डेवऑप्स वेब तो कंप्लीटली फ्रॉम pom.xml ए सब इंफॉर्मेशन से कोड पाउछि pom.xml राइट
complete ବର୍ତ୍ତମାନ build war file. So building କରୁଛି, building the war file. Build is success. See, build is success. Now our build part, a particular part success ହେଇଗଲା. तो build part success ପରେ ସେ କଣ କରିବ, post archive କରିଦେଲା, archive ହେଇଗଲା, ଏ complete stage complete ହେଇଗଲା. next stage ଆସୁଛି କଣ, ସେ deploy କରିବ କୋଉଠି କି, Tomcat server ku, right? So ଏଇଠି fail ହେଇଗଲା, Tomcat server ରେ fail ହେଇଗଲା. तो Tomcat server रे ଆମେ କଣ କରିବା, ସେ କଣ କଲା, failed in branch deploy. तो ଏଠି କଣ କଲା ନା, remote context with null workspace. See, ଆମର ଏଇ DevOps web app war file ଟା target folder ରେ create ହେଇଯାଇଛି to container. तो ଏଠି problem ଆସିଲା କୋଉଠି, fail to redeploy war. Let's check password protected. तो from manager text list तो हमको कौन करियर अछि, हमें ये जो एरर आसला आको हमें फिक्स करिवा, राइट? जो एरर आसला हमको फिक्स करिया, caused by this manager text list, राइट? तो ये जो एरर पाइन हमर गोटे सिंपल चेंजेस थिबो जोटा कि मैं तुमको बतई दउछि. तो एठी मु जदी जिबी conf फोल्डर को cd conf रे, तो एठी कौन करियर अछि ना, conf रे मते not conf. Let's go back. Go to web app. Web app folder रे इति manager, right? तो cd manager folder रे, तो इति directory रे vi context. हाँ, ये जो particular line था, so sorry, not web config रे, एटी meta-if को जीवो तमे कोडी web apps folder, Tomcat web apps folder manager meta-inf रे जीवो. meta-inf रे हमको गोटा अछि कोन context.xml. तो ये context.xml रे हमको छोटो चेंजेस करिया अछि. एटी कोन करछि ना, allow ए जो IP address टा दउछि, allow local IP address. तो कोन होबो जे हम एटा को चेंज कर देबा, राइट? ए वैल्यू टा को हमें चेंज करदा, चेंज कर देले ऑटोमेटिक एटा काम करिवो. तो मु कोन करिवा जाउछि, ए वाल्व टा को तो वर्तमान मु कमेंट कर देबो जाउछि, ठीक अछि? आर कमेंट केमति यूज होबो, इस पर्टिकुलर लाइन टा को मु कमेंट कर देबो. डन. जेतु एटा लोकल आईपी एड्रेस, लोकल होस्ट आईपी एड्रेस नउछि, राइट? सेति पय होनी कमेंट कर दे. हे गेल. देन तो वर्तमान कोन अछि, मते cd opt tomcat फोल्डर को जाई करी bin फोल्डर को जेवा पड़ियो, सेठी रिस्टार्ट करिया पड़ियो, राइट? catalina stop तापर start. ओके, apache सर्वर रिस्टार्ट मु कर देली. apache सर्वर जदी मु रिफ्रेश करली तो apache सर्वर हमर रन होउची. नाउ तो मु कोन कली, छोटो फिक्सेस कली कोडी meta-inf फोल्डर रे context.xml रे छोटो फिक्स कली. तो सेटा को जाई कि हुनी एबे मु कोन करिवा ना, हमर से प्रोजेक्ट टा रन करिवा, राइट? तो आउथरे मु बिल्ड करिवा को जाउची. हमर बिल्ड तो ऑलरेडी सक्सेस, राइट? आउथरे बिल्ड करची मु. नेक्स्ट लेट्स सी, hopefully this time it will work perfectly. Let's see. The build success after build করছি এটাକୁ, right? Just hold on for a few seconds. Let the tab build is complete. Oops, what happened? Please wait, Jenkins is getting to ready. What happened to Jenkins? Okay.
Okay, contact console output. So resuming build. देखो बर्तमान कौन है ना आमर पाइपलाइन स्क्रिप्ट रो कौन बेनिफिट मु तुमको कहतली जदी किछि गोटे रिस्टार्ट हैला सर्वर हमर सर्वर मझे कौन हैला रिस्टार्ट हे गला तो जो बिल्ड जति की स्टार्ट हैला सेइटु संगे संगे रिज्यूम करूचे ठीक ए बिल्ड पर्टिकुलर जावा बिल्ड हमर बिल्ट इन नोड होची मास्टर मशीन राइट तो एटा हमर जावा बिल्ड होची लेट्स गो देयर चेक द तो जावा बिल्ड पैकेज 1 minute 46 सेकंड हे गलानी still it is building. Okay, so that means it might be got stuck here, right? So mate kon kare achi let's delete this build. Okay, let's delete this build. तो मुझे abort कर देली abort करिवा पई एटा मु कैंसिल कली एटा abort हे जिवो राइट तो मु कोन करछि abort कर देली राइट abort कला परे भी सेटे रन होछि aborted by click possible terminate running stakes. ओके टर्मिनेट हे गला राइट टर्मिनेट हे गला तो वर्तमान मते कोन करे अछि आउथरे रन करूछु जेतो एटा मु फोर्सफुली टर्मिनेट कली राइट लेट्स बिल्ड एति पय जेटा स्टॉक हे गला कोन पय ना मझिर जेते तो रिस्टार्ट हे गला सर्वर तो सेति पय स्टॉक हे गला हमर जावा बिल्ड तो एबे मु फ्रेश बिल्ड कली सी ऑटोमेटिकली बिल्ड जल्दी सक्सेस हे गला राइट बहुत क्विकली फ्यू सेकंड तापर हमर डिप्लॉय भी हे गला देखो वर फाइल टा हमर कंप्लीटली जावा एप्लीकेशन को डिप्लॉय हे गला राइट इजीली डिप्लॉयड सो व्हाट वी कैन डू नाउ वी कैन जस्ट गो एंड चेक आवर एप्लीकेशन तो हम एप्लीकेशन ना कोन थिला हम एप्लीकेशन ना थिला डेवऑप्स वेब राइट एप्लीकेशन ना तो मत वर्तन एटी devops web see the DevOps class ranges by version 2.8 batch B11 demo class तो वर्तमान एटा हमर एप्लीकेशन कंस्टेंट कंप्लीटली डिप्लॉय हे गला तो मु को गली बिल्ड आउट डिलीवर कर देली डिप्लॉय हे गला तो मते बे किछि कोड चेंजेस करी आउथरे रन करियर अछि देखिया केमती होउछि राइट तो मु क्विकली व्हाट आई विल डू go there so in this folder I'm going to so developer कोन करिवो ना वर्तमान कोड चेंज करिवो तो हमको आउ डेवलपर डेवऑप्स इंजीनियर काम सरी गला कंप्लीट ऑटोमेशन सेटअप कर देला तो डेवलपर कोन करिवो एबे जाई करी कोड किछि चेंज करिवो राइट तो मते किछि कोड चेंज करियर अछि सपोज तो मु एठी 2.8 वर्जन जगह रे सपोज 2.9 लिखली आ B11 जगह रे B12 डेमो क्लास लिखली कमिट चेंजेस तो डेवलपर कोन कला ता कोड चेंज करि जाला ता एप्लीकेशन कोड पुश चेंजेस करि देला बा पुश करि देला राइट तो चेंजेस सरला परे तो डेवलपर को हमें तो हैंडओवर दे देथिबा तो बेसिकली नॉर्मली कोन होबे ना तो से माने कोन करबे ना टेस्टिंग टीम वाला बा डेवलपमेंट वाला से माने डायरेक्ट आसीबे खाली बिल्ड रन करिवे जदी मैन्युअली बिल्ड ट्रिगर करिया अछि ऑटोमेटिक वे रे केमती करियबो जेमति कि हमें वेरियस ट्रिगर ऑप्शंस देखितले कोडा पोल एससीएम गिटहब हुक ट्रिगर ए सब देखितले राइट से वे रे हमें करि परिबा राइट तो डेवलपर कोन करबे बिल्ड नाउ कला the build now fourth build run ela right fourth build again build will start because ame code change heichi code change ela build hebo nuwa package create hebo sei nuwa package ta kon hala na deploy he gala kodi tomcat server को deploy he gala तो वर्तमान कोन अछि प्रीवियस कोड हमर थिला 2.8 हमर nuwa code deploy हे गला तो मैं रिफ्रेश करूची देखो 2.9 B12 तो हमार नुआ एप्लीकेशन डिप्लॉय होला तो एटा गाइस कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन कंटीन्यूअस बिल्ड को जो कंटीन्यूअस बिल्ड आउ कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट हेला तो एटा डिप्लॉयमेंट जेतु हमें लोअर एनवायरनमेंट को करचे बा टेस्टिंग स्टेजिंग एनवायरनमेंट को तो एटा हमें डिलीवरी करबा कंटीन्यूअस डिलीवरी तो हमें आज देखिए कोन कंप्लीट प्रोजेक्ट ऑन कंटीन्यूअस डिलीवरी आउ कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन आउ कंटीन्यूअस डिलीवरी तो सिमिलरली हम नेक्स्ट क्लास रे हमें कौन करवा ना नेक्स्ट क्लास रे हमें कंप्लीटली चेक करवा कोन जो हमें
एबे कोन गोटे सर्वर रे आमे केवल बिल्ड करथिले तो गोटे सर्वर रे केवल बिल्ड करथिले तो नेक्स्ट क्लास रे आमे कोन करबा ना सेटा कंप्लीटली यूज करबा कोन मास्टर आउ एजेंट सेटअप तो जोटा कि आमे वर्तमान बिल्ड सर्वर मु बनैथिली कोन मास्टर जेनकिंस मशीन को राइट जेनकिंस मशीन को मु बिल्ड सर्वर बनैथिली तो वर्तमान नेक्स्ट क्लास रे आमे कोन करबा ना आमे गोटे नुवा बिल्ड सर्वर क्रिएट करबा जोटी कि हमर एप्लीकेशन बिल्ड हबो आउ गोटे डिफरेंट सर्वर रहइबो जोटी कि कंप्लीटली डिप्लॉय हबो ता सेटा हमें देखिया केमती S3 रे हमें रखि परिबा तो ये जो प्रोजेक्ट ता मु आज कली तो एटा जेमिटल तुम माने प्रैक्टिस करो आ मते तार स्क्रीनशॉट पठाओ आ तमे मोर ए जो रिपोजिटरी ता अछि डेवऑप्स वेब आकु फोर्क करि परिबो फोर्क करि करी तम एप्लीकेशन तमे निजे पाइपलाइन स्क्रिप्ट लिखिबो जहां भी आज पढ़ाला से पाइपलाइन स्क्रिप्ट रे जहां जहां सेटअप्स करछि फ्रॉम स्क्रैच राइट सबु सेटअप करिवो तापरे हमको मते तार स्क्रीनशॉट देखैबो जे मु करछि बोली तो नेक्स्ट क्लास रे हमें मूव करिबे मास्टर आउ एजेंट सेटअप ता सहित आउ टिके एडवांस कांसेप्ट आडि ठीक अछि आज भाई एते की तो नेक्स्ट क्लास काली सेम 8 टा ठीक अछि बाय बाय